अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह आज भी हम डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस पर बात करूंगा, जो कि डॉक्टर साहब का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। उससे ये क्वेश्चन किया गया कि अल्लाह ताला को किसने ही बनाया, नाउज़ बिल्ला, ये क्वेश्चन किया गया। तो डॉक्टर साहब इस पर बड़ी ही डिटेल के साथ जवाब देगा। आइए ये वीडियो सुन लेते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली मर्तबा आया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, साथ ही वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखा करो। तो ये जो वीडियो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, हमने इसके सबटाइटल उर्दू में लगाए हैं, तो आप उर्दू इसकी पढ़ सकते हैं। तो आइए वीडियो सुन लेते हैं। The second question. My name. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hasibullah. I am a Muslim and a student of the university. I am from Afghanistan. My question is, if someone asks me who is the creator of God, is it permissible for me to answer or remain silent? Because the messenger of God said in a hadith, Satan creates questions in your mind until he says, who created God? And at that time, you should seek refuge in Allah from evil of Satan. The question asked by Hasibullah is that when someone asks him who created God, what should he do? Should he answer or should he remain silent? And our beloved Prophet said in hadith that Satan whispers and asks questions to extent that he asks who created God. At that time it should say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. And this is a Sahih hadith. माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो आप आगे भी सुन के जाएं इसको। Regarding a question that should he remain silent or should he reply, depending upon your ability and your knowledge. For a general Muslim who may not be well versed with replying to atheists or replying to non-Muslims and answering such questions, best is he should remain silent. He should, follow the hadith which says that A'udhu billahi minash shaitanir rajim, recite and say you seek refuge in Allah from Satan the accursed, because he's not well versed. But at the same time, Allah says in the Quran, in Surah Nahl chapter 16 verse 43 and Surah Anbiya chapter number 21 verse number 7, Fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. If you don't know, ask the person who is knowledgeable. So if you are a da'i or if you are a student of knowledge, and if you search for this answer and you go and find a logical reply for this, then surely you come in the field of student of knowledge and you come in the field of da'i. So in such situation, but natural, if you know the reply and if you know how convincingly you can reply to such question, then you should answer. And I've given the reply to this question earlier in many of my question answer session, after many of my lectures, that when someone बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ डॉक्टर साहब आपके सामने गुफ्तगू इरशाद फरमा रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो समझ आ रही है तो इस वीडियो को पूरा देख लें। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, तो जो इसका जो जवाब दे रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त है, तो आगे भी इसको सुनते जाएं। asks you the question that who created Allah, the reply should be Allah is uncreated. The definition of Allah is that Allah is uncreated. The moment you say who created Allah, he says it should be Allah, because the definition of Allah is uncreated. And I give an example that you can ask the question to your friend who's asked you this question, who created Allah. Ask him that my friend by the name of John, he was admitted into a hospital and he gave birth to a child. Can you guess whether the child was a girl or a boy? And if your friend is intelligent, he will realize that a man cannot give birth to a child. So a man who cannot give birth to a child, to ask the question that he gave birth to a child, can you guess it was a girl or a boy, is an illogical question. Because by definition, a man cannot give birth to a child. Similarly, by definition of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is uncreated. So if you're asking the question, who created Allah, who created God, that means you don't know the definition of Allah. Because you don't know the definition of Allah, in your ignorance you're asking this question. So that doesn't mean that the person is intelligent. It means the person who is asking you the question is ignorant. So you have to point out his ignorance by posing him a counter question, and then he realizes that his question is illogical. Because the definition of Allah, one of the definitions is he's uncreated. So you can, if the person doesn't realize and says, oh, you don't know the answer, you have lost, you pose him a counter question like the way I did. That a friend of mine
who is a man admitted to hospital. माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ आप लोगों के सामने इंग्लिश लैंग्वेज में बयान फरमाया है। जिस तरह उसके सामने इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन किया गया कि नाउज़ बिल्ला खुदा को किसने ही बनाया, तो डॉक्टर साहब ने भी इंग्लिश लैंग्वेज में उसको जवाब दिया, लेकिन हमने इस वीडियो के सबटाइटल उर्दू में लगाए हैं। आपने भी उनको खुद रीड करके आपको भी ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया, आधा समझ आया है, तो अगला पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो आपके सामने लाऊंगा। तो मेरे ख्याल में आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इस तरह और भी कंटेंट और डॉक्टर साहब की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो इसी बना पर चैनल को या सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा कि आपको उर्दू कंटेंट पसंद है या आपको इसी तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट उर्दू हो ये पसंद है। तो आपने फ़ैसला करके मुझे बताना है, मैं उसी तरह ही आपके सामने कंटेंट लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं किसी यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।